नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 4 जनवरी 2023 सुबह के 8 बजे हैं। मैं आपको आज ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का एंड ऑफ डे चार्ट जो अब आज सुबह देख रहा हूँ मैं, उसमें कुछ विशेष बातें थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। यह चार्ट मल्टी चार्ट्स के सॉफ्टवेयर से लिया गया है और उसके लिए मल्टी चार्ट्स का धन्यवाद। ये निफ्टी का एंड ऑफ डे चार्ट है कैंडल स्टिक्स का। आप इस अंतिम चरण को देखिए। यहाँ एक रेड कैंडल बना और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बने हैं छोटे छोटे, लेकिन ख़ास बात इसमें ये है कि कल और परसों दोनों के ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर बने हैं, यानी 2 इनसाइड डेज बने हैं इस कैंडल के अंदर। जब 2 इनसाइड डेज बनते हैं इसका मतलब बाजार बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है संकीर्ण दायरे में आ गया है और यहाँ से बाजार में एक अच्छा मूव आना चाहिए। ये कभी भी कहना सरल नहीं है कि मूव किस तरफ आएगा, पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आउटसाइड डे बना जिसके अंदर ये दोनों इनसाइड डे बने हैं, उसका लो 18,080 है और हाई 18,265 है। इसके ऊपर निफ्टी जाता है या नीचे जाता है तो हमको रुख मिल जाता है कि बाजार इस तरफ एक्सपेंशन कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने एक मूविंग एवरेज इसमें लगा रखा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये संदेश ये दे रहा है कि बाजार में हल्की तेज़ी है। नीचे एक मोमेंटम का इंडिकेटर है, ये भी वही बात बता रहा है। और सबसे नीचे एक एडीएक्स की तरह से एक इंडिकेटर लगा हुआ है। एडीएक्स तो नहीं है पर लगभग वैसा सा ही है। ये नीचे आने के बाद यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ घूम रहा है। इन तीनों को देखकर ये हम सोच सकते हैं कि शायद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा, लेकिन ये तैयार रहिए कि बाजार में अच्छा मूव आना चाहिए है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज 4th January 2023, Wednesday. I am making this early morning video at 2 minutes past 8 in the morning because I wanted to share a pattern on the Nifty with you. This is the end of the chart for the Nifty. First, I must explain that this chart is taken from multi-charts, and the courtesy, my thanks to multi-charts for this chart and for the indicators that are applied here. I use multi-charts extensively. Apart from trend analyzer, these are the 2 pieces of software that I use. Now, this is the candlestick end of day chart for the Nifty. The interesting part is happening at the right end here. On Friday we saw a large red candle, you can see this, and then on Monday and Tuesday we saw 2 small green candles, but both the green candles are enclosed by the large red candle, which means essentially we had 2 small inside days which are completely contained by Friday's move. So 2 inside days tell us that the market is now ready for a big move. This is contraction. Once contraction is completed, expansion takes place. We can identify the levels at which this expansion could continue. 18,265 is the high of Friday. If this is taken out, we are expecting an up move. 18,080 is the low of Friday. If this is taking on the downside, we expect something to happen on the downside. Between these 2 ranges, the contraction continues. Now I have this moving average indicator here, and which is rising slowly. Similarly, the momentum indicator in the second chart is also rising. And third, this is an indicator, the lowest one, which is similar to ADX, not exactly ADX but similar. Now after showing a trend on the downside, the histogram is slowly moving up, suggesting that the downtrend is now getting exhausted, and this was the downtrend. Now all of this suggests that we may be seeing a breakout on the upside. It's always difficult to say what will happen, but we know these levels. I hope you enjoyed this video. Take care. Jai Hind.